all are at home and everybody is using the internet, I can understand. I can completely understand that it becomes very difficult for you to actually follow the 11-minute video or 15-minute video or 20-minute video or so on. So that's the reason I'm making my videos short. It'll be only till 6 or 7 minutes. I'm not making more more than 6 or 7 minutes video. So that's the reason I'm making this second part of my solubility table. So like I said, this will be my 112th video on this channel. I'm really happy about it. So please stay tuned, share my videos with others. There might be others who want to understand. And तो जैसे कि हमने बोला था कि भाई सॉल्युबिलिटी टेबल हम लोग आज सीखेंगे, तो सॉल्युबिलिटी टेबल के ऊपर मैं हूँ एंड ये है क्या, बेसिकली इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये सब हम लोग सीखेंगे. हम लोगों को पता कैसे चलेगा, हाउ विल कम टू नो विच इज़ एक्वस, विच इज़ सॉलिड एंड विच इज़ गैसेस इन नेचर, विच इज़ लिक्विड इन नेचर, हाउ विल कम टू नो, विल थिंक अबाउट इट एंड लेट अस फर्स्ट सी व्हाट माय सॉल्युबिलिटी टेबल सेज. ठीक है ना. तो अब भाई मेरे पास यहाँ पे आई विल प्रेफर यू और आई वुड इंकरेज यू गाइज टू मेक अ कॉलम लाइक दिस in order to understand. ठीक है ना. तो अब मेरे पास यहाँ पे है, in this section I am saying that these are soluble in, these elements are soluble in water, hence they are aqueous in nature. ठीक है ना. And these are the exceptions. If these exceptions are getting attached, if they are making compounds, if these elements making compounds with these elements, then these elements are the reason, because of them they will be insoluble, they will be remaining solid in nature and they will not get dissolved in the water. ठीक है ना. अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं. ग्रुप 1 एलिमेंट्स है हमारे पास. ग्रुप 1 एलिमेंट्स इज लाइक लिथियम, पोटाशियम, सोडियम. ठीक है ना. अब हमारे पास और भी जितने भी ग्रुप 1 में एलिमेंट्स आते हैं, है ना, जैसे कि ये सारे ग्रुप 1 एलिमेंट्स. आई थॉट इट वुड बी बेटर इफ़ आई एम शोइंग यू साइड बाय साइड. तो ये सारे मेरे ग्रुप 1 एलिमेंट्स हो गए. रुबीडियम हो गया, केसियम हो गया, फ्रेंसियम हो गया. दिस ऑल आर माई ग्रुप 1 एलिमेंट्स. इफ़ माई ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर देयर, देन ऑब्वियसली देर आर ऑल सॉल्युबल इन वाटर, मीन्स दीज आर ऑल सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है ना. बट देर आर नो एक्सेप्शंस, मीन्स देर इज़ नो such metals are there or non-metals are there which are making them solid in nature when they are combining with this. ठीक है ना. अब अमोनिया है तो there is no exception. Nitrate, there is no exception, means there is no metal for nitrate which is making it insoluble in water or solid in nature. ठीक है ना. There are 2 forms to write acetate, so both of the forms I have written over here. C2H3O2 also minus, this is the minus charge, -1 charge, -1 charge, +1, +1, +1, +1, right. I have written the charges also over here. So you can write the some people write the acetate like this, some people write the acetate like this. There are 2 forms, है ना. Second is CH3COO माइनस. ठीक है ना. इसका भी कोई एक्सेप्शन नहीं है. हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑल्सो हैज़ नो एक्सेप्शन. परक्लोरेट ऑल्सो हैज़ नो एक्सेप्शन. ठीक है ना. बट ऑल द हेलोजेंस, व्हाट आर द हेलोजेंस भाई, हेलोजेंस होते हैं ये. ठीक है ना. ग्रुप 17 is called halogens. Group 17s are called halogens, so that's the reason I've written over here chlorine, bromine and iodine, right. Chlorine, bromine, iodine, है ना. So etc. These are the group 17 halogens. Group 17 halogens are dissolvable in water. ठीक है ना. These are dissolvable in water, hence they are called aqueous in nature. They are aqueous in nature. ठीक है ना. But if with group 17 Ag, plumbus, है ना, दिस और मर्करी, ठीक है ना, इफ़ दिस आर एडेड, ठीक है ना, सिल्वर, प्लम्बस, मर्करी, इफ़ दीज आर एडेड विद ग्रुप 17 एलिमेंट्स, देन दे बिकम सॉलिड इन नेचर. समझ में आया. ठीक है ना. यहीं पे लिखा हुआ है ना, इफ़ दीज 3 मेटल्स फॉर्म्स कंपाउंड विद हेलोजेंस देन दे बिकम सॉलिड इन नेचर और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. ठीक है ना. वन एंड द सेम थिंग. अब सल्फेट में हमारे पास क्या है भाई, सल्फेट है, दैट इज सॉल्युबल इन नेचर. ठीक है. बट सल्फेट, इफ सल्फेट इज बिन गिवन इन वन इक्वेशन एंड द सल्फेट इज गेटिंग और मेकिंग कंपाउंड विद अगेन सिल्वर, प्लम्बस, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम और बेरियम, है ना, तो देन दैट सल्फेट विल बिकम इनसॉल्युबल, means solid in nature. Understanding my point, children? All these metals with sulfate becomes insoluble or solid as a compound in a reaction. ठीक है ना. Means if my sulfate has been written with silver, plumbus, calcium, strontium and barium, then we will write S over there instead of AQ, though sulfur is soluble in water. ठीक है ना. But it is making compound with these elements, so we will write S instead of AQ. ठीक है. Now
एक्विस में नहीं लिखूँगी, एस लिखूँगी। अब ये अगेन मेरा दूसरा टेबल क्या है, दीज आर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, ठीक है ना, दीज आर इनसॉल्युबल एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और फॉर्मूलाज, बट व्हेन दे अटैच विद दीज दे बिकम सॉल्युबल इन नेचर, ठीक है ना। समझ में? over here if these soluble substances are attaching with these they will become insoluble in nature, but over here this section of the insoluble substances, if they are attaching with these soluble substances then they are becoming soluble in nature or aqueous in nature, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कार्बोनेट, हमारे को दे रखा है if carbonate is attaching with group 1 elements, what are group 1 elements is 1 helium, hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, caesium and francium, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, क्रोमेट है। क्रोमेट इफ अटैचिंग विद ग्रुप 1 एलिमेंट्स लाइक दिस ऑल दीज, ठीक है ना, ग्रुप 1 एलिमेंट्स, उसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अमोनियम, ठीक है। if chromate is there in the chemical reaction and making a compound with any of these then it becomes soluble in nature, though chromate is insoluble, ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही फॉस्फेट है, फॉस्फेट इज insoluble in nature means solid, ठीक है ना, insoluble का मतलब क्या है, solid in nature, ठीक है ना। so जब ये phosphate is going to attach with group 1 elements or ammonia it will become soluble in nature, that is aqueous, ठीक है। ऐसे सल्फाइड है, सल्फाइड though it is solid in nature but if it's going to attach with group 1 elements or ammonia then it's going to become aqueous in nature, aqueous means soluble, ठीक है ना। That's what we have learned in our this thing, right? Aqueous means soluble but it won't be a pure state, the water is mixed with some kind of chemical, है ना, it is not in pure state of water but still soluble in the water, right? That's what we have learned in the previous video. अब यहाँ पे आ जाते हैं हाइड्रोक्साइड है भाई हमारे पास, हाइड्रोक्साइड इज अगेन सॉलिड इन नेचर बट इफ इट्स मिक्सिंग अप विद मेकिंग अ कंपाउंड विद ग्रुप 1 एलिमेंट्स और NH4, अमोनिया, कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रोंटियम देन इट विल बिकम एक्वस इन नेचर। अंडरस्टूड माय चिल्ड्रन, ठीक है ना। अब इसके ये सारे एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो स्टे ट्यून, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। दिस इज एलिस राज एंड आई एम साइनिंग ऑफ।